I've seen a lot of hardships in initial days. I lost my father when I was very young. Then my mother joined the government service, little salary, two kids, their education. So I have gone through all that. And I came to Mumbai and, started doing ad films. And then after your 1 year of your fame is gone, of some talent hunt, and then you're the old ones and there's no work. So I tell कि यार not as such कि चल के पैदल चले हैं बहुत लंबा लंबा ट्रेन के धक्के खाएं, वो सब लोग तो थे ही, क्यों काम नहीं है, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, वो फेज भी है यहाँ पर. एंड बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप तो आप क्या करोगे, बट वही है उस टाइम पे आपको संभालने की जरूरत है, गिव अप करने की वो चॉइस नहीं है किसी के पास. Hello everyone, my name is Rudrani and welcome to Speak Easy. Today I have a very special guest. He's someone who's been doing very interesting work and really exploring the talent within. It's high time Bollywood, and in fact the Hindi film industry took notice of Sharad Kelkar, who's been doing some really amazing work. Thank you, Sharad, for joining in. Thank you, Rudrani. Thank you so much. You've seen it all, the lowest of the low, right? And now it feels better, Sharad, because now you have different roles coming to you. Yeah, I'm quite contented in terms of the kind of roles which are coming to me. Quite happy that people are trusting me. Industry is, giving me chances one after another. So growing, I think the growth is happening, and that's the most important thing as an actor, what I want to do in my life. So really happy and looking forward for more such kind of opportunities and collaborations. Touch wood, the response is great. But I don't get into all खुद की तारीफ नहीं पसंद नहीं है मुझे. मैं उसमें घुसता, मैं काम में बिलीव करता हूँ. मैं वर्कहॉलिक. मेरे घर पे लड़ाई का एक ही रीज़न है कि मैं वर्कहॉलिक हूँ. मैं घर पे ज़्यादा टाइम रहता नहीं हूँ. मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ. So I think I don't concentrate or I don't give notice to what's happening around, but yeah, what's happening within me or as an actor, how I'm growing, that's the most important. शरद की जो वॉइस है वो बहुत ही कीमती है. Your voice is special, and I was reading about how you overcame your stammer, and you're sitting where you are with that voice of yours, with that clarity. क्योंकि मुझे लगता है आपके शब्दों में clarity होती है, आपके dialogues में भी clarity होती है. And I am just stunned and I'm inspired. तो मुझे ये जानना है what you had to go through. Obviously, it's still quite fresh, and I really want or I want to tell people or the parents or the friends of such kind of person who is going through this problem that don't demoralize them first of all. You were bullied उसके लिए? Obviously, They made fun of you. Shut up. बहुत टाइम लगाएगा यार. So all that, people used to like really enact me sometimes कि कैसे सच में मतलब tease करते थे. हाँ. So that's you change that, Any person is going through any like stammering हो, चाहे वो lisp हो या कुछ भी हो, don't demoralize people. Don't then pinpoint every time that he knows that he stammers. You don't need to tell him that you stammer first. Yeah. So don't discourage them. And what I realized in my life that okay, stammering hai, but it can be, overcome by some means. So I worked on it. I did my research. I did a lot of practice. I did understand what is the matter with me. Why? Because there was a lot of confidence in me. I came to Mumbai. I studied and I did a lot of things, and the confidence was there. But why it's happening? So I went to the deep little thought, and then understood that I have a little problem with my breathing. So I just improved that, and I think it's 70% is gone stammering, but still I stammer when I fight with my wife. I can't argue. हो जाता है मेरा वहाँ पर. वो तो nervousness भी हो सकता है. Understand, the nervousness is the correct thing. When you are nervous, और उसमें भी आपका क्या होता है कि your breathing changes. जी. As the breathing will change, you can't speak as fluent as you can speak normally. So you have to be very calm, composed to speak nicely. And we have Mr. Amitabh Bachchan, who is the baritone voice, right? The bap of everything. So I think I observed him also, his speech pattern, how he speaks, his pauses, his, the silences in between the lines, and all that. That worked a lot for me because
I understood कि he takes a pause at a particular time and how he inhales and says his line and takes a pause there. Or, so it's a very मतलब मेथोडिकल था आपका पूरा. very very attractive speech pattern he has, not just a voice. But वो करना नहीं था. I just learned from it because otherwise लगता है कि same copy कर रहे हो आप. But there is a little bit of Mr. Like your voice does remind me correct, of. Correct. So that's a problem now. It's a लोगों ने बोला है ना. When we act together or something, I did an ad film, so I was more worried about how will I dub this. Oh yeah. फिर क्या हुआ? किया वो थोड़ा अच्छे है. अजीब लगता है ना तो? But अजीब because it's quite on the same. So there are different baritones. कबीर सर का अलग है, रजा मुजराज सर का अलग है, बस एक बैरिटोन. अजय सर का थोड़ा अलग है, ग्रफी है. बच्चन साहब को तो मतलब सब कुछ अलग है. सो बट मेरा और अमिताभ बच्चन का जो एक वो बैरिटोन का एक टेक्सचर होता है वो बहुत सिमिलर है. आई एग्री. एक और एक्टर है इकबाल, उसका भी देखेंगे, इकबाल खान, उसका भी ऐसे ही आवाज़ है, भारी है. बट वो जो टेक्सचर की से बड़ा परेशानी होती है कभी ऐसा लगे ना. और कि इतनी फिल्में देखी ना बचपन से तो बस एक इन्फ्लुएंस तो है ना, भाई साहब कैसे हैं, तो वो निकल आता है. तब लगता है ना कि नहीं 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 केस वेस ना कर दें कॉपीराइट का. मिस्टर बच्चन काफी फ्लावर्स और खत लिखते हैं, क्या पता लिख दें मेरे लिए भी. खत लिख दें. मैं पिछले 20 साल से वेट कर रहा हूँ कि यार ऐसा एक लेटर मेरे पास भी आया है, मेरे काफी दोस्तों के पास आया है, मेरे पास नहीं है सर. कुछ करना पड़ेगा अच्छा काम. आप कर रहे हो. आप तानाजी देख लो एक बार. आपने बोला ये. बोलता हूँ. लोग इस इंडस्ट्री में हर किसी को ना हीरो ही बनना है यहाँ पे आके. बट आई सी यू मेकिंग योर स्पेस through characters, and I think that's such a difficult thing to do, and you've connected with an audience. Like you have people, you know, like when we sat here, the first thing you said is, अरे हमारे फिल्म में तो इतने बड़े-बड़े branded actors हैं, which is true. Like you know, you have Ajay, you have Sonakshi, but I know what you mean by that because they have become brands, right? But in a film like this, when you are there, I see people recognizing that you are there. कितना मुश्किल था खुद के, because I feel like you've also put your ego aside and your insecurities aside to only act. You know, कि I will only do certain kind of roles to be the hero is not there in you, which I think is great. I'll take maybe 5 minutes for this, for your thing, because it's a little long statement I want to make. You know, when I was doing TV, I was doing the #1 show in India. I know. It was the most famous show all across the globe, I think, wherever Hindi watchers were there. Yeah. And I was a hero of that show. So I have seen that heroism, that stardom, what people crave for. But you know, after a certain time, no, there is no happiness there because there is no growth. You're doing the same stuff every day, and yeah, people are recognizing you, they're wishing you, they are in love with you. But internally, what? Internally, nothing is happening. So from that time only, I think, not just before joining, but after maybe 5-6 years back only, after my first show only, first major show, after that only, I decided that I will not do similar kind of roles. So I did anti-hero, then I did a matured character, then I did the detective, then a blind man on TV. So from there only my thought was to act in different roles, different characters, and ईगो को हटा दिया. So ईगो था ही नहीं मुझे. एक ही साल जो ईगो था, तो ईगो मतलब जो एक suddenly you get fame, you are #1, so you are on cloud 9 and you. But I've seen and वो रखा नहीं मैंने कभी, because if you fly high, there's a high risk of falling down, I say. So better to be on ground और काम करते रहो. और मुझे पता है यार कि आपकी किस्मत है, अगर वो बड़ा हाथ होता है उसका. If you have the luck with you and if you're hardworking and persistent, तो the time will come for you. और मैंने कईयों को बोला ऐसा, मतलब हुआ भी लोगों के साथ भी. मुझे याद है आज हम कर रहे थे शूटिंग, मैं कर रहा था रॉकी हैंडसम की शूटिंग कर रहा था, और पंकज त्रिपाठी सर कर रहे थे सिंघम. तो हम साथ में खाना खाते थे, और उनकी कुछ फिल्में आई थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर आई थी, और कुछ टीवी का ऑफर है, और मैं टीवी करता था, उनको पता था. तो उन्होंने पूछा मुझसे, भाई ये, मैंने कहा सर आपके जैसे आप थोड़े से गड़बड़ा जाओ सर वहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव काम होता है जो आपको शायद मज़ा नहीं आए करने में. बट यू नो सब कुछ अलग चॉइसेस होती हैं, प्रेफरेंसेस. बोला नहीं यार मतलब करते हैं. मैंने सर आप क्यों नहीं वेट करते हो, आपका सब कुछ सेट हो जाएगा लाइफ में, थोड़ा वेट कर लो, टाइम आएगा आपका, आप बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत अच्छा एक्टर हो आप. सर मैं करके आया हूँ. मैंने बोला आप क्यों कर रहे हो, टाइम आए कर लेना अपना अच्छा काम है. माय वर्ड्स वर लाइक दिस, नॉट प्रवचन कि क्यों आपका टाइम, ऐसा कुछ नहीं था. नहीं. सो लाइक कैजुअली वी वर स्पीकिंग एंड वी वर हैविंग लंच एंड आई सेड कि सर मत करो, क्या करोगे करके, आपका आएगा टाइम अच्छा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, ट्रस्ट मी ऑन दिस, सबका आता है. एंड सी, सो
मेरा ये थॉट था कि नहीं करते रहो यार काम करते रहोगे ना तो कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा लाइफ में. तो मैं right now also what I do different kind of roles, different films, different languages, different regional films. So I want to gain more and more from this industry. So मैं वो करता हूँ. बाकी thank you to all the audiences जो picture देख रहे हैं, and if they say that if Sharad is there, we want to watch the film. It's the biggest award for me. Finally, because when the trailer was launched, I was watching some reviews and I saw a few comments on that, and I feel happy that people are trusting you. Yeah, और आपका एक झलक आता है. You know what I mean? There's the one very important dialogue, and that's it. क्या ना आप जो काम कर रहे हो उसका validation हो रहा है. Yeah. That is the happiness, I think, and I totally want to thank all the viewers who watch and who put me there where I am right now. I think all the love which they gave me, thank you so much for that, because as an actor, as a performer, you just crave for those words and those claps. So nothing is more important than that. Like you were saying, you had no money in the bank. You had other things going on. You were trying to figure out your life, and from that you still held on. How is what I want to know. What held you on? Like choice नहीं है. Life में choices मत रखो. Keep choices, na, then your divergence happens. Choices ही मत रखो ना लाइफ में कि यहाँ से पलटने का choice नहीं है मेरे पास. खुद को ये कहा. I have to survive. I have to be the fighter. अब ये survival भी खत्म हुई तो I need to be victorious. That's has to be the motivation. जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं हमेशा जो यंग जितने भी लड़के आते हैं उनको बोलता हूँ कि बस consistent रहो, effort मारते रहो, और भी वो struggle भूल जाओ. Struggle नहीं है. Enjoy this phase. ये लर्निंग फेज है. इसमें जो भी दिन एक एक सेकंड आज में जियो, कल का सोचो मत. आज जो कर रहे हो उसके ऊपर ध्यान दो और क्या नया सीख सकते हो आज, उस पे ध्यान. बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स इन इनिशियल डेज. मतलब आई लॉस्ट माय फादर व्हेन आई वाज वेरी यंग. देन माय मदर joined the government service, little salary, 2 kids, the education. So I have gone through all that, and I came to Mumbai and started doing ad films, and then after your 1 year of your fame is gone, of some talent hunt, and then you're the old ones and there's no work. So I tell कि यार मतलब not as such कि चल के पैदल चले हैं बहुत लंबा लंबा, ट्रेन के धक्के खाएं, वो सब लो तो थे ही. Later on when you achieve something and then the phase come ना, जो second phase होता है जो एक लो, that is the most dangerous one. मेंटेन करना है ये. हाँ, बट मेंटेन भी नहीं करना है. ये किया था बट अभी सब चला गया. हाँ, वो ले गया. कहाँ गया? कहाँ गलती की हमने क्या गड़बड़ कर दिया वहाँ पर, क्यों काम नहीं है, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, वो फेज भी है यहाँ पर. एंड बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो आप क्या करोगे. बट वही है, उस टाइम पे आपको संभालने की जरूरत है. गिव अप करने की वो चॉइस नहीं है किसी के पास. तो यू टू बी मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग अबाउट व्हाट आई फील. आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है यार. बहुत छोटी सी चीज़ है वो. मैं कहता हूँ ये चीज़, अगर आप खुद खुश रहते हैं तभी आप दूसरों को खुश रख सकते हैं. सही बात और वो हैप्पीनेस अंदर है, वो बाहर ढूंढे. वो गाड़ी बंगला कुछ नहीं है. मैं आप मुझे इनोवा दो उसमें सो जाता हूँ, मैं आगे चलाता नहीं हूँ. मैं कोई भी गाड़ी दो मैं सोता ही हूँ गाड़ी के अंदर. So it doesn't matter whether I have a Mercedes or I have an Alto or which car. मैं सो रहा हूँ गाड़ी के अंदर. And that is वो आज की तारीख में मुझे नींद आ रही है और मुझे सोने को मिल रहा है. That is the most important thing. भूख लगी है, कुछ खाने को मिल रहा है. That is क्या खाने को मिल रहा है वो मत देखो. खाने को मिल रहा है ना, पेट भर रहा है. पेट भर. क्रेव भूख रखो काम के लिए, नॉलेज के लिए, टैलेंट के लिए. वो बहुत ज़रूरी है. और फैमिली के लिए. माई फैमिली सपोर्टेड मी अलॉट. माई वाइफ, हम पहले से बताइए यार क्या लास्ट जब शुरू किया था हमने तो कैसे थे, मैक्सिमम वहीं पहुंचेंगे ना, उससे नीचे तो नहीं गिरेंगे ना. सो इट्स फाइन, चलता है. That's fabulous. Thank you, Sharad. Thank you. It's always wonderful chatting with you. Thank you, same अब here. बहुत दिनों के बाद ऐसे आसपास बैठ के ऐसे हाँ, मजा आ जब रहा है. सामने बैठे बात ही नहीं होती, जूम कॉल पे चल रहा है जो हो रहा है. वो तो फिर लग रहा है अरे. नहीं बट मैं बोलता हूँ ना हमेशा लोगों को यार लाइफ में खुश रहो यार. हाँ. खुश रहना बहुत छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढो, फालतू बड़ा ढूंढने की जरूरत नहीं है कुछ. मतलब आप में दुखी हो जाता है आज की डेट में छोटी छोटी चीज़ों पे. Thank you so much, Sharad. Lots of love to you. Thank you. God bless you. Thank you.